Friends, this is, I think, the toughest test of my life. I took on myself introducing anthropology of politics. Hopefully, I pass through. Maybe I do not. Only the results will tell. But as far as this technique is concerned, uh, I think it's reliable. If things have to be set right, if conclusions are not the way I expect, the new generation they can change, they can increase the sample size, they can improve on the technique, they can create a mass base of anthropologists and sociologists from across the country to have live feedback the way you have participant observation. Because this election, plenty of ifs and buts are there. The way it started in the beginning, it seemed as if that 400 par would be somewhat nearer to the way they did. But as it progressed, opposition was in shambles. It was just PM, 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 nothing else. Whatever I have talked about previously, I'm not going to talk about. Yet, I wish that you watch the interviews of the husband of your finance minister that are going around everywhere in various YouTube channels. Worth watching. Forget about PK and forget about वो कौन था एनडीटीवी वाला रवीश. Just concentrate on the people who spoke at ground with the people who were to vote. As the election progressed, it became very clear that this slogan it was nowhere near the reality. आज भी जो हैं भाजपा वाले सोचते हैं कि नहीं 350 तो हो गई. One thing let me tell you very clearly, इलेक्शन जितवाने वाले लोग जो है ना दे बिलोंग टू द लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास. और जो ओपिनियन बनाने वाले हैं दीज आर द पीपल हु आर मिडिल क्लास, एस्पायरिंग मिडिल क्लास एंड अपर क्लास. सो ऑब्वियसली जो कंक्लूजन आएंगे वो जरूरी नहीं है कि होंगे. अब इस डिस्कशन में इट विल बिकम टू लेंथी, सो आई वोंट टॉक अबाउट द Form 17C debate that was there. I'm not going to talk about the clause 171. I'm not going to talk about the share bazaar. But one thing let me tell you. More than 50,000 crores of rupees, maybe dollars, have been withdrawn by FIIs, and the tempo has been forcefully, deliberately, artificially being maintained through investment from corporations, through the order of the state, most likely. I won't talk about Elon Musk, who cancelled his trip, because he is the one who has all the knowledge with him. He must have got some information about what is happening, what is to be happening in the election. I won't talk about the change in the media stance after the India had their first meet in Delhi. And number of issues are there we have to ignore, because now is the final. The elections are as good as over. Only 59 seats are there. But I'll talk about two things. First is the constitution. Everybody is swearing by constitution, and nobody is actually interested in. BJP says they'll maintain, but then that 400 par was the issue. One of them said कि change in constitution तो चाहिए क्योंकि हम amend करना चाह रहे हैं, and that gave enough fuel to India. Previously, the elections were dictated by BJP. BJP means Modi, you can say. And the opposition followed the narrative. For the first time, it has happened that it is now other way around.
बीजेपी वांटेड टू बी बेस्ड ऑन नेशनल इश्यूज, इंडिया ने उसको लोकल इश्यूज बना दिया, particularly poverty, employment. मोदी जी वांटेड टू स्टार्ट विद करप्शन, इलेक्शन बॉन्ड सामने आ गए. Just think about where all the issues have gone. You remember the adoption of villages? एक एक गांव अडॉप्ट करो सारे एमपी, कहाँ गए वो? ये स्मार्ट सिटीज कहाँ गए? ये मुद्रा लोन कहाँ गए? ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विनाश, कहाँ चले गए सारे इशू? ये इलेक्शन में तो नजर नहीं आए. इलेक्शन का रूल होता है कि 80% अटैक, 20% डिफेंड. जो पार्टी रूल में होती है उनको 20% डिफेंड करना होता है अपनी अचीवमेंट्स के थ्रू. ऐसा तो कुछ पहले 5 चरणों में तो नजर नहीं आया. तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो अपोजिशन ने जो, मैं तो इसको शोषा ही कहूंगा, बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन. आई नेवर फेवर 10 kg that promote further corruption. I'll never favor 1 lakh. पर वो इसका इशू नहीं है, इलेक्शंस की बात हो रही है. सेकंड इशू जो है इंपॉर्टेंट एंड विच हैज बीन टेकन वेरी लाइटली, नॉट दैट सीरियसली, इज आरएसएस. बीजेपी वाज एन ऑर्गन ऑफ आरएसएस. बच्चा है आरएसएस का. जैसे विश्व हिंदू परिषद है, जैसे बजरंग दल है, जैसे वनवासी कल्याण आश्रम है, जैसे भारतीय मजदूर संघ है, वगैरह वगैरह. Modi ji was sent to BJP by the RSS, and the way his politics that is there, वो जिस सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं उस सीढ़ी को या तो गिरा देते हैं या तोड़ देते हैं. गुजरात की पॉलिटिक्स देख लो, केशवभाऊ ठाकरे वगैरह जो थे, वे देयर मेंटर्स. सेंटर की पॉलिटिक्स को देख लो, सिंपल सा रूल है. अब तो खैर वो भगवान हो गए हैं तो उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए. तो इस दौरान जिस तरह से पॉलिटिक्स बदली है ड्यूरिंग द इलेक्शंस, पहले 2 इलेक्शन के टाइम पे ही मैंने 2 फेजेस के टाइम पे ही आई हैड गिवन माय डिसीजन व्हाट इट इज गोइंग टू बी. आई हैड गिवन इट. आफ्टर सेकंड फेज ओनली इट इज 230 plus minus 30. But as the election went on, I felt like changing it downwards. But then another issue that comes up, it is EC. The way EC has performed, the way the world has seen, the way people in other countries are laughing at our great democracy. पहले ऐसा नहीं था. अब तो सारी बात बाहर जाती है. अगर आप लोगों के रिलेशंस हैं बाहर में, उनसे पूछिए कि क्या सोचते हैं हमारे इलेक्शंस के बारे में. So I wanted to downgrade, but I did not, because now it is plus minus EC. I wanted to downgrade, I did not, because we do not know what will be the impact of EC, what will be the impact of the electronic machinery that has been employed, what has been done by the state, because whatever things are being done, like Modi ji took 1 full day off day before from campaigning, last day campaign, the last phase campaign, he was clearing files, he was doing transfers posting, which I think is unconstitutional. But if an election commission can be working unconstitutionally, obviously, and this RSS issue which I raised, the moment 2 phases gone,
And after third phase, Modi ji went to Nagpur, and for the first time in 10 years, he was there overnight, and he couldn't console RSS the way Modi ji has treated. He was fulfilling the objectives of RSS without involving the RSS. पहले क्या होता था, मैंने खुद देखा है, सीट्स का डिवीजन होता था. A few seats would be given to Vidyarthi Parishad, a few seats to Bajrang Dal, a few seats to this and that. फर्स्ट 2014 में क्या हुआ था, आपको अगर याद हो तो मोदी जी की फोटो होती थी, पूरे एनडीओ की फोटो पीछे पे होती थी. 2019 के इलेक्शन में क्या होता था, मोदी जी की फोटो होती थी और बीजेपी के लोगों की होती थी. और 2024 में क्या हुआ, मोदी जी रह गए. तो मोदी जी रह ही नहीं गए, ही डिक्लेयर्ड लिटरली के नड्डा जी ने बोला कि आरएसएस से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जब तक हमें चाहिए था तब तक चाहिए था. ही जस्ट फॉरगॉट कि आधे से ज्यादा लोग आज भी बीजेपी में आरएसएस के ही हैं. इन केस इफ मोदी जी नीड्स सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, even people from within BJP may revolt. I can name a few, but I won't. If you remember the history of Jansangh, Professor Balraj Madhok, he was the president. Unceremoniously, he was removed. Some of you must know about 1978-79. जनता पार्टी टूटी इसीलिए थी. उनसे कहा गया था कि आइदर यू डिलिंक योरसेल्फ फ्रॉम आरएसएस और यू लीव जनता पार्टी. And they chose they decided to leave Janata Party. So much of sincerity is there with Sangh Parivar. This time, about 1/3 of the fighting people in the last 10 years, they are turncoats who neither know the values of RSS nor the workers have any attachment to them. मोदी जी को एक अकड़ हो गई थी, जैसे महात्मा गांधी को हो गई थी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ. बट अभी सिद्धारमैया को खड़ा किया था, बोस से हार गए, तो गांधी जी ने क्या कहा था, मतलब उसका मतलब ये था कि मैं गधा भी खड़ा करूं तो उसको जीतना चाहिए. द सेम इज द एटीट्यूड ऑफ मोदी जी. हमेशा ध्यान रखो कि हर इलेक्शन में जो सिटिंग एमपीज होते हैं कहीं भी, उनमें से 50% हारते ही हैं ऑन एन एवरेज. और यूपी और बिहार में बहुत कम कैंडिडेट बदले गए. अब हम अगर स्टेट वाइज अगर बात करें तो कुछ स्टेट्स की जो विच आर वाइटल फॉर द कंक्लूजन फॉर दिस ईयर्स, एंड ऑफ कोर्स लेट मी टेल यू वन थिंग in terms of social sciences. गवर्नमेंट से हमें 5 किलो अनाज दिया भाई. मैं हूं, मेरे 2 जवान बेटे घर में बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, 5 किलो अनाज मिल रहा है, तो मैं किसको सपोर्ट करूंगा. इतनी छोटी सी बात सरकार को समझ नहीं आती. रोजगार से ही बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है, गरीबी से भी मुद्दा बड़ा हो सकता है. इमरजेंसी के टाइम पे एक बंगाली राइटर ने एक 4 लाइनें लिखी थी, द ओल्डर इज मार्चिंग, द यंगर इज मार्चिंग, एंड बिटवीन द टू द हंगर इज मार्चिंग. किसी ने ध्यान नहीं दिया. हम पंजाबी में कहते हैं पेट ना पहिया रोटियां ते सबे गल्लां खोटियां. अनलेस योर belly is full, everything is false. And even if you are giving food, where is the nutrition? I have talked in different videos, and that is not the issue for today. I'll just talk about some of the important states that matter. Like in this case, hmm, they claim that they are going to do well in South, definitely, but only in terms of votes. At the best, they may get a seat or maybe one each, not more than that. And I'm going to be a bit liberal with BJP.
First damaging state is Karnataka. After that sex scandal that came out, I wonder they may lose up to 15 seats. I can predict more also. Again, I told you I got to be liberal. Maharashtra is another state. The biggest blunder BJP did is splitting Shiv Sena and NCP. They thought that shared votes would be shared, but people's sentiment is still with the original Shiv Sena. Original means Bal Thackeray Shiv Sena. Similarly with NCP, majority is with them. And then the corruption charge is 70,000 crore. You only raise the issue and you made the person as deputy CM. People are blind? I don't think. Even in Gujarat, I expect, I mean, there can be more, but at least one or two can go easily. Rajasthan, people say more than 8, but I'll stick with 6. Vasundhara is the one. What Modi ji did, literally tried to kill everybody who could have come up, even if as a follower. In one of the videos, I said that the day they decided 3 CMs, that day only I concluded that downfall has started. Modi ji says, I can make anyone, I can break anyone. This ego does not sustain in a democracy. And then Delhi, Punjab, Haryana. In Haryana, again, they say it will be clean sweep against BJP. But still, let us say 6 seats. In Punjab, 1 seat was with the Akalis, 1 with the BJP, and the 2 were together, but 1 seat may be lost there also. 7, Himachal, all the 4 seats are with them, but let us say 1 seat goes to the opposite. 8, Uttarakhand, again 5 seats are there, at least 1. 9, as a whole, 9 seats again. UP is the issue. What Modi ji says, do Shahzade. This clicked last time. When election started, opposition was in disarray. They glued somehow, and that's a magic. Reason is not the qualities these people have, the reason is the people. When the election began, the question arose, Modi against whom? And now the things became clear, Modi against the people. And in a democracy, always people win. Out of 62 which they had, at least 15 they lose. But I told you I'll be a bit liberal. In Bihar, Nitish is doing not that bad. But as a whole, you can say again minimum. The best thing that could have happened to them was Odisha. Naveen was very honest when he gave 2/3 seats to them for Lok Sabha and 1/3 for Vidhan Sabha. And BJP insisted, their wickedness came out, that we will have 2/3 both ways. They lost an ally. And they are not coming to power in the state also. But they may win again, but this will be positive. Chhattisgarh, again, likely minus. In Andhra and Karnataka, some support is there, particularly Telugu Desam Party. But it will be their gain. BJP by itself may win 2 seats, but these may win because of that 10 seats. That will be positive. In Bengal, it was a tough fight. But that Sandesh Khali exposure, BJP's hypocrisy was clear. So all that goodwill was lost. So instead of gaining, they are losing.
And as a whole in the northeast, let us say they are losing 2 to 5. I'll say 2 only. They are not fighting in J&K, so no question. And J&K, it is peace. पीस इतनी है कि एक कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सकते। और पूरी दुनिया बेवकूफ बन के सुन रही है उनको। सो एज ए होल कितना हो गया ये? जितना भी हो गया, कुल मिला के दे आर लूजिंग समथिंग लाइक 80 to 100. I am saying I was softer towards them. The point is, अगर बीजेपी को सीट्स मेरे हिसाब से रह गई, दे विल नीड द सपोर्ट ऑफ सम पीपल। कौन सपोर्ट करेगा अपोजिशन में से? मोदी जी और शाह के रहते। नवीन को नाराज कर लिया आपने। ममता को कुछ मिलता तो साथ देती, लेकिन उसको भी नाराज कर लिया आपने। यहां जो है जिसकी बेटी को आपने जेल भेज दिया, वो आपका साथ देगा। चंद्रबाबू नायडू जो है वो तो मतलब जिसको फायदा होगा वो उसके साथ जाएगा। नीतीश बाबू कैन चेंज साइड। नीतीश बाबू इज फीलिंग सफोकेटेड। इफ यू हैव सीन, वो जो कैंपेन चल रहा था, नीतीश बाबू के हाथ में कमल का फूल था, उसकी अपनी पार्टी का साइन भी नहीं था। सो थिंग्स आर नॉट वेरी रोजी फॉर बीजेपी। पर सवाल उठता है कि इन केस अगर वो पहुंचते हैं 230 के आसपास, जब मैं सोच रहा हूं अप टू 250 अगर है, तो वो तोड़फोड़ करके पूरी कर लेंगे। मोदी अमित शाह के पास हर एक की फाइल होती है, वो तो हम सबको पता है। लेकिन उससे कम रह गया अगर, तो ये जो लोग हैं जो टीडीपी और नीतीश, दे आर लिटरली नॉट गोइंग टू सपोर्ट। और नवीन वाज a respite for them everywhere whenever BJP required. Even if he was not a part of their group, he always supported, whether it is Lok Sabha और राज्यसभा। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक चीज मैं बताना भूल गया, लाइक इट्स नॉट एन इशू ऑफ ओनली आरएसएस गेटिंग एंटागनाइज्ड। मुद्दा सबसे बड़ा मैंने कहा, द followers of RSS who have been blindly following BJP, who have been taking the voter to the booth. अब नड्डा जी के ये कहने के बाद what ethics they will have? वो तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, लेकिन वो इंडिया को भी वोट नहीं दे सकते। तो व्हेन दे स्टे बैक, ये जो 7वां फेज है, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वोटिंग टर्नआउट गिरने वाला है। बाकी देखते हैं। तो इसलिए जो कुछ भी होता रहे, प्रॉब्लम यह है कि 23 साल तक गद्दी में रहने के बाद, डू यू थिंक इट विल बी इजियर फॉर मोदी जी टू relinquish? So if he gives an extension of 1 month to army staff, which he has no right during elections, if he has 5 transfers and postings yesterday of secretaries in the ministry, plus anything more, if yesterday he said that we have no enmity with any political party, what does this mean? 100 छुए खा के बिल्ली हज को चली तो चलता नहीं है। So next coming days are going to be very gloomy for the country. One positive that will emerge from this is that we will have a very strong opposition after a very long time. Whether it is India or it is NDA, opposition is going to be very strong. लेकिन जो हालात होंगे 4 तारीख को, मैं कुछ कह के मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ एक शैल चतुर्वेदी की 1.5 लाइन की कविता है, आप लोग जैसा इंटरप्रेट करना चाहें तो करें। शैल चतुर्वेदी की कविता है, देश में अमन चैन है, ये अखबार पुराना है। थिंक अबाउट